Hi guys, how are you? So, today we will start a new chapter. I know your exam is very near, and actually, I was having some fever and issues. That's why I was not able. So, that's why today I am here to complete one full chapter in one shot. Better, right? Guys, tell me. So, we will complete this chapter. So, let's go on. So, first, if we see the definition of cell in Google, what it says. So this is the letter it has came this cell. But the first thing in dictionary also if we will see, it will say that a small room where a prisoner is locked. So a small room where prisoner is locked. So you have seen I guess in a prison like this rooms are there, right? Jail types rooms are there, right? And there one person has been captured. So that one room is actually known as cell. So now this is in 2023 Google is giving these things. Okay. Now this biology comes very later actually. First who discovered this cell thing that today we are going to learn this cell, they also didn't know anything about this thing. So after that this came. But actually you understand what it means that the prisoners that only Google says, because that you can see that is given most priority in the first position. Understood? Means as a room where a prisoner has been locked. This is said by Google. Chalo. Now we will discover. This is you think this is not discovered. We have to discover this. चलो डिस्कवर करते हैं. So ये चैप्टर का यही कंटेंट्स है कि सेल के बारे में जाने. I have already written some things with the yellow pen so you can understand levels of organization, components of cell, and plant and animals. These are the four contents, main contents I have got from this. So if you see this cell have many things. This is part, I guess in the previous class you have learned this part is called nucleus. This part is called cell membrane. Have you not? Who have not? Tell me. And this part is called a cytoplasm. And everything without this two without cell membrane is called as a protoplasm. You have learned I guess, right? But not goodly. Those who are private schools I guess those who, they only have learned. But don't worry because I am here. I will be teaching you. Okay. So जैसे आपका स्कूल स्कूल है ये एक स्कूल है. Okay. The school have different rooms or classrooms. You're having your own auditorium, your teacher staff room, principal room. You're having, yes or not? You're having. So these rooms can be referred also as cell because each rooms. But what Google says where a prisoner is locked. That particular is called as cell. So this one room, one basic unit is known as a cell in your school, in your prison. Okay. Like that, if a human being, if a animal is there, it is also made by a cells. Cells are thus basic structure and function. Means it gives a structure to organisms and all the function is exhibits. It will help it to exhibits. Understood? All the function it is doing, all the things it is doing, who is helping? The cell. Understood?
It is known as, that's why, the basic unit of life. मीन्स लाइफ अगर है, इस पर्टिकुलर एक छोटा थिंग, इट इज सेल इन योर बॉडी, is giving your life. It gives you structure and it does all the function that is occurring, right? See, this particular guy named Robert Hooke. Okay, this particular guy observed, means he was developing actually what, a microscope, compound microscope he was developing. Understand? ना माइक्रोस्कोप बना है तो कुछ तो देखना पड़ेगा, करेक्ट? माइक्रोस्कोप बना है तो कुछ देखना पड़ेगा ना. So that time he took a bark, dead bark को बोलते हैं cork, sorry, bark of a cork. He took, okay. उस cork को क्या किया, ऑब्जर्व किया, तब उन्हें ऐसा कुछ दिखा जहाँ पर एक हनीकॉम मतलब ऐसे बी हाउस में होता है ना, वैसा कुछ फ्लावरी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर उन्हें देखने मिला. ऐसा, that is not a fully developed microscope, that's the magnifying device, simple magnifying device. और वो एक कमरा की तरह वो सोचने लगे कि, like, if you think, right, if you see something like this, what idea will come, that ये एक जॉब, ये एक तो वो सोचने लगा कि तो ये तो प्रिजन की लग रहा है, प्रिजन की तरह लग रहा है, जैसे जेल हो, वैसे ही अरेंज किया है, सुइटेबली अरेंज किया गया है. तो वो इस एक सब्सटेंस को क्या बोले, सेल. वही लिखा गया है, देखो, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फंक्शन यूनिट विच इज टिपिकली माइक्रोस्कोप, मीन्स देखा नहीं जा सकता, दैट इज अ सेल, जो हमारे बायोलॉजी ने बोला है, ये बायोलॉजी. बट इफ यू टेक एस नाउ, then it is actually a presence. Understood that honeycomb, like these things are called, he named as the cells. So actually one thing मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि सेल थ्योरी डेवलप किया गया था. सेल थ्योरी, जैसे एक एनिमल है, ये एक एनिमल है, सोचिए एक ह्यूमन है, ये एक अगर मैग्नीफाई किया जाएगा तो उसके ऐसे ऐसे स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स बने हैं, right? Like this structure it is having. Okay, so these are called as cell. So first theory is telling that all the living organism, कोई भी, अगर कोई जानवर, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई छोटा जानवर अगर लिविंग है तो ऑब्वियसली सेल्स के द्वारा ही निर्मित है. If any organism is living, that means they are made up of cells. Or organisms means only living organisms. Okay, we does not think tell non-living organisms, right? We tell, we does not tell. So this पहला theory समझ में आ गया, मैं लिख दूंगा. Now second क्या बोला, second thing what they told, like first they understand all organisms are made up of. Second thing they told that the cells are the structural and functional unit. मतलब सेल, जो सेल्स ही हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शन निर्धारित करता है. और थर्ड वन, सेल्स occur from pre-existing cells.
जब आप क्लास 10 में जाओगे तो ये वाला आपको आंसर मिल जाएगा कि इसका मायना क्या है। जब क्लास 10 में रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, रिप्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वैसा चैप्टर है, उस चैप्टर में आपको म्यूटिस माइटोसिस के बारे में समझाया जाएगा। तब आप समझ जाओगे कि सेल्स कैसे सेल को, मैं आप शॉर्ट में बता देता हूँ। एक सेल है, जब ये रिप्रोड्यूस हो गया, जैसे ओवा, इसमें स्पर्म आया, तो ये क्या हो गया, एक जाइगोट फॉर्म। ये ह्यूमन में होता है। पर अगर हमारे बॉडी में सेल का वृद्धि करना है तो हम लोग तो एवरीडे वी कैन रिप्रोड्यूस, because we have to reproduce to get a younger version of ourselves, not to get our cells, correct? So हमारा सेल्स ऐसे ही किया गया है कि एक सेल है, ये लिविंग सेल है, कोई कारण जैसे बर्न हो जाना तो ये क्या हो गया, डेड हो गया। जब ये डेड हो गया तो इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस दोनों पार्ट में से इसे कॉपी कर लेता है, कॉपी करके इस दोनों भाग में से तोड़ देता है और ये फिशन के रूप में दो सेल्स बना देता है। तो एक सेल से ही दो सेल बना। तो सेल्स आर ऑकरिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये आप क्लास 9-10 में अच्छा समझोगे। तो तीन थिंग बोला, थ्री थिंग्स बोला कि all organisms are made up of cell, cells are the structure and functional unit, and cells occur from the pre-existing cells. Now level of organism देखिए, यूनिसेलुलर, जैसे एमोबा के बारे में आप क्लास 7 में पढ़े हो, कैसे न्यूट्रिशन, तो दिस सिंगल सेल मींस एक ही सेल है, वन सेल। बट लायन, ह्यूमंस, they are having many cells. So the organism that is having many cells are called as the multicellular organisms, and those are having single cell are called uni. Uni means single. As why unicellular organisms means single cell organisms, and multicellular organisms means many cells. समझ में आया? Now cell, देखिए हमारा ऑर्गेनिजम्स कैसे बनता है। मैंने इतना देर से बोल रहा हूँ कि वो हमारा स्ट्रक्चर निर्धारित करता है, वो हमारा फंक्शन निर्धारित करता है। तो कैसे करता है वो निर्धारित, हाउ इट विल बी इम्प्लाइंग आवर फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर in our body, right? So actually a cell, you can see the cell first, it is given cell, right? Now it is becoming tissue, means see small cells are joining together like dermal tissue. You will learning this in our next class, just learn one example. Then these tissues will be joining together to form an organ like stomach. These organs will be joining together to form an organ system like digestive system. Now these organisms will be forming with the multiple systems. Like in humans, we have the reproductive system, we have the respiratory system, we have the digestive system, we have the muscular system, we have the nervous system, we have the skeletal system. So many systems, excretory system, right? So many systems we are having. In detail, in summary, we will learn in life processes chapter class 10. All the systems we will learn. Now, it is understand कि ए एक, I guess you understand. Now see, I am just telling you that I was telling you about life processes. So ये एक सेल है, you are not able to visible. This is a cell. This is a cell. Now these cells will be joining together. See,
they are called as tissue. When this tissue join, they will form an organ. When this organ will form, they will be forming a organ system. When this will join, it will form an organism. समझ में आया? Cell multiplying to tissue, tissue multiplying to organ, organ multiplying to organ system multiplying to, is this into millions from tissue. This into trillions from organ. Organ into thousand from system. System into 20 will form a single organisms. यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर देखिए एक सेल और दो सेल देखिए एग्जांपल देखिए डिफरेंस देखिए so unicellular composed of single cell and there are multiple cell more than one cell simple body and complex body organization single जितना लाइफ प्रोसेस a सिंगल सेल करेगा उतना ही एक ट्रिलियन सेल्स वाला ऑर्गेनिज्म भी करेगा सपोज एमोबा पैरामीशियम एंड वैसे ही लायंस ह्यूमंस आर ऑल द now see types of cell neuron you know neuron is used to transmit the message okay like यहाँ पर आपका फिंगर है तो वो आपका ब्रेन में मैसेज आएगा तो दिस न्यूरॉन विल ट्रांसफर तो इसलिए एलोंगेटेड किया है एलोंगेटेड मीन स्ट्रेस्ड है स्ट्रेस इसलिए है क्योंकि जिससे वो मैसेज इजीली ट्रांसफर कर सके राइट और ये देखिए ये ऐसा ये भी एलोंगेटेड है मसल सेल इससे वो स्ट्रेच एंड कॉन्ट्रैक्ट इजीली कर सके इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट बोलते हैं सब बाइसेप ट्राइसेप करते हो ना ये ऐसे स्ट्रेच हो रहा है फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो इजीली हो सके इसलिए ऐसा सेल है आरबीसी आप पढ़े हो इज ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन दैट्स व्हिच इज शेप्ड लाइक दिस वन a bean shaped. Then if you see amoeba and WBC are irregular shaped or undefined shaped because they want do a special thing known as phagocytosis. They both जैसे आप पढ़े होंगे like if a amoeba produces a food then it engulfs that and throws out the left part. So ये देखिए ये जो फॉर्म कर रहा है जो उसे ग्रैब कर रहा है अपने भीतर ग्रैब कर रहा है तो इसको ही बोल रहे हैं फेगोटाइसिटिस में शेप चेंज करके कुछ को अपने अपना ग्रैब करना वैसे ही वैसे ही अगर आप देखोगे वैसे आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि WBC जब कोई जर्म आता है तो उसको तो मारना है WBC का काम है तो वो क्या करेगा फेगोसाइटिस करेगा और उसको अंडर में ले लेगा अंदर में लेकर उसको डेट करके बाहर फेंक देगा so they also do phagocytosis they also do phagocytosis that's why their shape is irregular so add so size check न्यूरॉन का 1 मीटर हो सकता है 1 मीटर किस में होता है एलिफेंट में होता है याद रखना 0.1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक हो सकता है और इसका 7 to 8 माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर मीन्स वेट सो अगर हम लोग पढ़े माइक्रोमीटर क्या है माइक्रोन क्या है so it is 0.001 millimeter that we say as micron. So if we see 117 to 135 millimeter is the smallest cell in the world that is mycoplasma. The largest is ostrich egg. Largest cell is ostrich egg. That is so big that it is not microscopic also. So ओके फ्लैजेला मीन्स वीप गाइस जो ऐसे टेल का पैरामेसियम का होता है वैसा और अगर आप देखोगे पैरामेसियम का ऊपर के हिसाब से ऐसा होता है पैरामेशियम
भाई सिलिया को इसको बोलते हैं, हेयर को बोलते हैं, फ्लैजेला को वीप को बोलते हैं। ये सेल है। द वॉल ऑफ द क्लासरूम इज सिमिलर टू द सेल मेम्ब्रेन। अगर ये आपका क्लासरूम एक सेल है, तो ये जो वॉल्स है ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। सो लेट्स लर्न अबाउट द कंपोनेंट्स। और जो यहाँ पर एयर ब्लो हो रहा है वो साइटोप्लाज्म है, और टीचर जो है वो न्यूक्लियस है, और स्टूडेंट्स जो है वो है क्या, दैट इज नथिंग। सो यहाँ पर एक क्लासरूम है, राइट। क्लासरूम के जो बाउंड्रीज है वो होता है क्या, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। जो टीचर है मीन्स जो कंट्रोल कर रहा है क्लास को, उससे हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस। और जो स्टूडेंट्स है जिनका बात मान रहा है उसे हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनेल्स इन द सेल स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन मीन्स द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल। ओके। बाहर का एक एनवायरमेंट से ये सेपरेट करता है, जो अंदर में है उसको सेपरेट करता है। नाउ सेल वॉल। सेल वॉल स्पेशली किससे बना होता है जानते हो, सेलुलोस। और ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है। प्लांट का जो सेल होता है सिर्फ उस सेल में ही होता है, क्योंकि उन्हें तो कोई देखिए उन्हें कोई बोन नहीं है, उनका कोई बोन नहीं है, उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है प्रॉपर। So that's why they want what? A rigidity. So how they will get rigidity with this cell wall? That will provide a protection from the outer environment, because they can move also and they need rigidity also. Now nucleus, as I told, nucleus is a brain, or we can say control center. ओके। सो न्यूक्लियस का भी ऊपर का जो पार्ट है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियस की जैसा होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। वो प्रोटीन सिंथेसिस मींस प्रोटीन को जनरेट करता है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ न्यूक्लियस में कुछ चीज होता है उसे बोलते हैं जीन्स। ओके। जीन्स हमारा यूनिट ऑफ हीट होता है, मतलब पेरेंट्स का अगर लेफ्ट हैंड है, मदर भी लेफ्ट हैंडेड है, तो चाइल्ड 90% पॉसिबिलिटी है कि वो लेफ्ट हैंड पैदा होंगी, ना कि राइट हैंड। बिकॉज यहाँ से वो जीन ले रहा है, यहाँ से वो जीन ले रहा है, मतलब क्या वो इनहेरिट कर रहा है। मेरा आंख मेरी मम्मी की जैसे दिखता है, क्यों, मेरा मम्मी का जीन मुझ में आ गया है। अंडरस्टूड। सो वही जीन होता है, क्रोमोसोम होता है। टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। अगर दो एक्स क्रोमोसोम आ गए, देखिए दिस इज ओवा। ओवा मीन्स द एग ऑफ द मदर एंड द स्पर्म। बॉयज का होता है एक्स एंड वाई, एंड गर्ल्स का होता है एक्स एंड एक्स। अगर दिस एक्स एंड दिस एक्स कॉम्बाइन, so they will form a girl again, because x x होता है गर्ल का। If this x and this y will combine, it will form a boy. So ऐसे ही things होता है। We will learn in the reproduction chapter. Okay. Now types of cells can be either prokaryotic or eukaryotic according to their nucleus. Okay. Now prokaryotic have the well defined nucleus. देखोगे तो prokaryotic don't have, they have like this structures inside them. Whereas यूक्रियोटिक का एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है। ओके। जिसका थ्रू न्यूक्लियस रहता है उसे हम लोग प्रोक्रियाटिक, और जिसका नहीं रहता है उसको बोलते हैं हम लोग यूक्रियोटिक। ऑलवेज यूनिसेलुलर प्रोक्रियोटिक एंड ऑलवेज यूनिसेलुलर, यूक्रियोटिक आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर बोथ। प्रोक्रियोटिक यूजुअली प्रेजेंट इन like chemically in nature. See, always unicellular, multicellular.
Okay, they are usually present in the chemical complex nature and usually simple in nature. They are present. Sinular is present. They are absent. Cytoplasm is present. Some cell organs are absent. They are cytoplasm is present. Cell organs are also present. Example बैक्टीरिया प्लांट एनिमल सेल. इसका न्यूक्लियस अच्छा नहीं है. उसे हम ऐसे रोल किया हुआ है. के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एंक्लोज नहीं है. हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस के ऊपर में एक मेम्ब्रेन होता है, उसे बोले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और अंदर में न्यूक्लियस होता है. इस न्यूक्लियोलस होता है अंदर में. और इसका ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पर कोई सेल मेम्ब्रेन, सॉरी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता. राइट. देयर आर डिफरेंट सेल membrane, like cell membrane, protects the cell. Nucleus control center. Central. See the central, I am writing in the picture only. Wait. Central, what they do? Central cell division means reproduction में sex determine करने में help करता है. Okay, cell division में करता है. Next is cytoplasm. Cytoplasm, a jelly like substance. Mitochondria help in the provide energy. Endoplasmic reticulum, transport substance. Transport substances. Then is Golgi apparatus. Golgi apparatus secrete chemicals. Lysosome digest the dead cells. Understood? Chalo. See, this is a plant cell. This is the animal. And now see the plant cell. Nucleus chloroplast. Chloroplast have chlorophyll and that only help in the photosynthesis. Vacuole stores food. Stores the food. Mitochondria, provides glucose. Cell membrane, cell wall also, Now, see. Chloroplast contain green colored pigment called chlorophyll that are essential for photosynthesis. I've already told. Vacuole stores nutrients, water. I've already told. Now, animal cell versus plant cell. Chloroplasts are present only in animal cell, but animal cells do not have chloroplast. Plant cell possess large number of central vacuoles. They have small vacuoles. Plant cell possess cell wall. They have the cell wall. They don't have cell wall. Plant cells are usually large. They are usually small. Also, remember, nucleus of the plant cell is there in the periphery. In the periphery. अगर आप देखोगे ये साइड में लोकेटेड है और इसका सेंट्रल में लोकेटेड है. कैन यू सी? सेंट्रल में लोकेटेड, इसका साइड में लोकेटेड है. So, इसका पेरीफेरी में न्यूक्लियस होता है, लार्ज वैक्यूल. इसका सेंटर में होता है. ओके, आई होप यू like this chapter. That is the cell, right? Now let me tell you one thing, that is cell wall, you understand, provide rigidity. Okay, cell membrane protects, right? Nucleus control center, and cytoplasm is a jelly like substance. Okay, nucleus have three parts. Nucleus have three parts, that is nucleolus, nuclear membrane, and nucleoplasm. Okay, nucleoplasm. Now, this nucleo contain DNA and genes that determines the sex of a child and the properties that they will be inheriting. Understand the whole chapter, and finally, a cell is the
functional and structural unit of life. If you don't understand, see 4 times this chapter, then you will be satisfied with this chapter. I hope you like this chapter. I have completed it very fast. You can see minimum at 2x and very fast 4 times. That's all. Meet you in the next class, which I guess one chapter is left that I will complete within this week. Bye.